So refraction का applications we will learn. First application is refraction में real depth and apparent depth का first application. Real depth and apparent depth. So each and every concept में they will ask the questions. Very important to learn. Okay, real depth and apparent depth. इसका कहानी क्या है? Let us see. Yeah. Sati, good morning. See, we started the applications of refraction में. First one is real depth and apparent depth. Okay. So what is real depth? What is apparent depth? We will see. Suppose मान लो this is a एक कंटेनर है. कंटेनर में पूरा पानी है. वाटर इज देयर. Okay. Now here there is a coin object है. You thought कभी भी आपको पानी से देखने से you'll feel that fish is coming upward. Fish is going down only, but you feel that a fish is up only. We want to catch the fish, but it will not come. Even if you put a coin also, the coin आपको थोड़ा ऊपर जैसे दिखेगा. You want to touch the coin, but नहीं होगा. बहुत दूर अंदर जाना पड़ेगा. Okay, that is called refraction के वजह से these all things are happening. Okay, so मान लो this is the object. Okay, इसका ऑब्जेक्ट है. इसका रियल डेप्थ है d. D is the real depth of the object from the surface. Always you are calculating from the surface only. Now we are seeing from the top view से we are seeing coin को we are seeing from the top view. So इसका image कैसे दिखेगा? When the object से rays should meet after reflection, then only we can see the image, right? So two rays should be there. Image formation के लिए two reflected rays should meet. Then only the image is formed. Okay. So one ray I am drawing normal incidence वाला. So normal incidence में क्या होगा? It will go straight without any deviation. आंख में reach हुआ one ray. And इसका refractive index मान लो mu I. Refractive index of the incident ray का refractive index का. And बाहर का refractive index का mu R. बाहर का refractive index. Okay. Okay. दूसरा ray निकाल रहा हूँ. ऐसा. So ऊपर rarer है, ये नीचे denser है. This angle of incidence I. So क्या होगा? When a ray of light is passing from denser to rarer, it moves away from normal, right? So it will not go straight, it will go away. So refracted rays को extend करूंगा. Two rays are meeting here. An object appears here. From the top view में से, if you see, the object will raise. आपको लगेगा कि ऊपर है. Okay, you want to catch with the hands, but नहीं होगा. बहुत दूर जाना पड़ेगा. अंदर है coin. Okay, and this is called apparent depth. D dash. D dash is called apparent depth. Okay. So our intention क्या है? To calculate the relation between real depth, apparent depth. क्या है relationship? We have to know. So this is R, right? Okay, this is R. Okay, this is R. Horizontal and this one. Horizontal and this one कितना होगा? This I, right? Okay. Now tell me, ये angle कितना होगा? This angle is how much? Horizontal and this line. Horizontal and this line is R. This is also R, right? Horizontal and this line. Here also horizontal, same line, R. Okay. Now I'm applying the Snell's law from here to here. Here to here. So what is the formula? Mu I into sin R. Mu I into sin R is equal to, actually you saw Satvik, that remaining video. Mu I into sin R, sin I, sorry, mu I into sin I is equal to, Snell's law अप्लाई करो. आउटसाइड क्या होगा? mu R into sin R. Snell's law अप्लाई करो. Our intention is to find D dash mu I mu R का relationship लेके आने का. That formula we are using for numericals के लिए. Okay. Now this actually two rays, ये इतना दूर जैसा नहीं है. Actually this B and A are very close. Then only the rays should enter into the pupil. छोटा सा hole रहेगा ना,
वो pupil में enter होगा, then only we can see the image, right? That means indirectly the angle is so small, the B and B tends to A बोलते हैं. In limits में आप सीखा होगा, B tends to A, very small. B and A are very small. Then only the ray should enter into the pupil. That's why here assumption रहेगा, whenever the very small angles go, we should take sin I as I only and tan I को I बोलते हैं. Approximately we can equate as I. Okay, that means I can replace indirectly and similarly sin R को R and tan R को R, approximately R. Okay, that means I can replace whenever small angle में sin I के जगह में tan I लगा सकता हूँ and sin R के जगह में tan R लगा सकता हूँ, because both are same, right? So we can replace sin with tan whenever small, a very small angle. Okay, so since I and R are very small, therefore इस Snell's law में substitute करो, mu I into tan I is equal to mu R into tan R. Now in this right angle triangle में what is tan I कितना है? Tan I, tell me. And what is this one? AB, देखो, this is I, right? This is I. This is also I. Tell me, in this right angle triangle में what is tan I? Mu I into this right angle triangle. In this right angle triangle में what is tan I? Opposite by adjacent. That opposite is how much? AB by adjacent is nothing but D only, is equal to mu R into tan R. In this small right angle triangle, what is tan R? Opposite by adjacent. So AB by adjacent nothing but D dash. So D dash AB cancel. So therefore आपको एक बड़ा फॉर्मूला आ गया, सिंपल फॉर्मूला है, that is mu I by D is equal to mu R by D dash. This is the relationship between apparent depth, real depth. Real depth is D, apparent depth is D dash. And always we should calculate from the surface of water, say only we are calculating. See, sometimes it can be above, sometimes it can be below also. Anything can happen. Based on the refractive index changing के हिसाब से above or below हो सकते हैं. So mu I by D is equal to mu R by D dash. How to remember? Wherever the object, first identify the object. ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहे ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली म्यू आई बाय ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ. सिमिलरली द रे इज एंटरिंग टू अदर मीडियम, राइट? दैट इज म्यू आर बाय द डी डैश. डी डैश फाइंड करने के बोलेगा, डी डैश अपरेंट डेप्थ कितना है बोलते, वी कैन फाइंड बाय डी डैश. ओके, सो फॉर्मूला ऐड करो. आई उधर लिखो डी एंड डी डैश शुड बी मेजर्ड from boundary. Okay, फॉर्मूला क्या? टेल मी. mu I by, से बोलो, mu I by D. Mu I by D is equals to mu R by D dash. D dash. D dash is the apparent depth. D is the real depth. Okay. Suppose मान लो, if outside medium is air, then if refracted light medium is air, then क्या होगा? Mu R का value is 1. So from this D dash is how much? D dash value is how much from this? इसका जगह में 1 है. So D dash equal to mu I by D
राइट, म्यू आई बाई डी ओनली आएगा, म्यू आई, और म्यू आई एम, आई को म्यू एम बोलते हैं। एक केस ले लेंगे, आपको और भी जनरल फार्मूला आएगा, समझ में आएगा। आई वांट टू कैलकुलेट शिफ्ट नाउ, सी आई वांट टू कैलकुलेट शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ। सो शिफ्ट करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स, सपोज मान लो सेम पानी है, इधर से वी आर सीइंग the object got raised like this is the original object D, and this is D dash, right? Okay, now what is the shift in this case? outside में air है ना, outside में air है, tell me what is shift now in this case में, what is shift? D minus D dash, then only this much shift हुआ, ये इतना shift हुआ ना, total real depth minus the boundary से D dash निकाल दिया तो we will get the shift. So लिखो, that is the formula, D minus D dash. Okay, so D माइनस डी डैश, डी डैश कैसा आएगा फ्रॉम दिस, टेल मी। डी डैश की जगह में आउटसाइड एयर है ना, म्यू आर इज एयर, सो डी डैश की जगह में डी बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू एम। ओके, सो डी बाई म्यू एम। सो अगर मैं डी कॉमन लूंगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू एम, इज शिफ्ट, इज फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला डी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू एम किसका, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आउटसाइड एयर है, तो आउटसाइड एयर नहीं है तो म्यू आर का जो भी है उसका यूज करेंगे। तो शिफ्ट का फॉर्मूला है डी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, खत्म, यही फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला बैठ करो, तो दिखा गया फॉर्मूला, दोनों दोनों फॉर्मूला, शिफ्ट एंड दिस वन रहेगा। टेल टॉपिक, म्यू एंड डी एंड अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का रिलेशनशिप क्या है सर? डी डैश बाय आई म्यू बाई, is नहीं equal म्यू to आई बाई डी इज इक्वल टू दिस वन, दिस फॉर्मूला आई वांट, दिस फॉर्मूला एंड शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट, दो फॉर्मूले है। म्यू आई इज द इंसिडेंट वेर एवर द ऑब्जेक्ट इज देयर, उधर से रे निकलेगा ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ओनली म्यू आई। म्यू आई बाई डी, बाउंड्री से कितना रियल डेप्थ है इनिशियली डी, एंड बाद में क्या होगा म्यू आर, द रे इज एंटरिंग इनटू दैट मीडियम म्यू आर, एंड डी डैश, डी डैश इज सरफेस से इतना दूर है ना, अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। सो हियर डी डैश इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ, द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, and this is real depth, real depth। बोलो फॉर्मूला, दो फॉर्मूलास बोलो। साथ बोलो, म्यू आई बाई, d dash by mu r is equal to d by mu i। अरे डी बाई कैसे आ रहे यार, ये बोलो बोले तो समझे, बोले म्यू रिवर्स आई, बदल गया। नहीं रिवर्स मत करो, म्यू आई बाई डी इज इक्वल टू mu r by d dash, डी डैश, एंड शिफ्ट इज फॉर्मूला d into 1 minus 1 by mu m। म्यू एम आ गया ना, म्यू एम इज द मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो आपको आइडेंटिफाई करो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, दैट इज द थिंग, बिकॉज ऑब्जेक्ट एवरी केस में इधर उधर चेंज हो सकता है। सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, उधर से जो रे निकलेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली म्यू आई, इंसिडेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ए रिफ्रैक्टेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर एवर। ओके, विल सी क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड, फॉर्मूला गया ना। चलो, वेरी फेमस क्वेश्चन, नो, चलो, दे गिवन वाटर में फिश इज देयर, ऊपर बर्ड इज देयर। ओके, फिशेस द वाटर लेवल से कितना ऊपर है, 36 मीटर्स ऊपर है बर्ड, एंड वाटर लेवल से कितना नीचे है, 36 मीटर्स है अंदर। इसका रिफ्रैक्टिवनेस इज गिवन, आउटसाइड इज एयर। ही इज आस्किंग फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, मतलब हियर अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड मींस हु इज ऑब्जेक्ट,
The bird. Bird is object. So the ray will be coming from the top, right? The ray will be coming like this, incident ray. Object identify करने का first. Now he's asking d dash. Apparent height means d dash. Find करो. So what is the formula? Mu I by d. I is nothing but air है ना? Mu of air by d is equal to mu of water. R is nothing but that one, right? By d dash. D dash we don't know. Surface से कितना दूर है नीचे में we don't know. So now d dash find करेंगे. Find करो. Mu I by d is equal to mu r by d dash. So mu area 1, d is how much? Real depth कितना है? Surface से कितना दूर में है? Object 36 is equal to mu w is 4 by 3 by d dash. Now d dash find करो. सब समझ में आ रहा है? So identify the object. Object से ray निकालो so that you can able to identify mu I mu r. Mu I by d is equal to mu r by d dash. 48. 48 meters is the apparent depth of the bird as seen by the fish. Okay, मतलब 48 meters means fish इधर से नीचे देखने से bird 36 meters में नहीं है, 48 meters दूर में bird is there. It fish को लग रहा है, fish को लग रहा है, apparent depth बोलते हैं. Okay, now tell me at what distance will the bird appear to fish? Now at what distance it will appear? Tell me total distance of it. From fish से bird distance कितना है now? Second question. Tell me कितना दूर है? This is 36 plus 48. 84. So 84 meters दूर में fish को लग रहा है bird is 84 meters from that. Now second one try करो, third one try करो. Find the apparent depth of the fish. Now who is object? Apparent depth of the fish. Fish is object, right? Now इधर से ray निकालो, fish is object, rays इधर से निकालो. Now solve. Mu I by d is equal to mu r by d dash. So 27 meters. Oh, correct only 27 meters. And the next one देखो. At what distance will the fish appears to the bird? मतलब actually 27 meters किधर से? Surface से bird देखने से surface से 27 meters दूर में fish इधर है. Exactly 27 meters दूर. Okay. Now at what distance will the fish appear to the bird? Now finally कितना distance दूर में बोलते हो? 36 plus 27. 63. It is 63 meters. So आपको जिम्मेदारी है आपको क्या फाइंड करने का? Who is the object? Object से ray निकालो. Simply use mu I by d is equal to mu r by d dash. So हमारा शुड़ा डॉट बोलो श्याम. Anything doubt? Yes. No, sir. Okay. चलो. हाँ देखो. Now I am giving multiple surfaces का. Multiple surfaces का I am giving. उसमें I want to find apparent depth of an object from the eye. So you will try. So एक मेथड क्या है? ऑब्जेक्ट इज हियर, राइट? ऑब्जेक्ट इज हियर है, ऊपर से देख रहा हूँ, सबका डिफरेंट, ये दोनों एयर है, नीचे ग्लास है, मतलब इस सरफेस की वजह से वन अपरेंट डेप्थ विल बी देयर. अगेन वो वाला जिस एक्टिंग लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन, एंड अगेन यू हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट एंड यू हैव टू डू वन इज लेंथी मेथड में. शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला मेथड है,
डायरेक्टली वी यूज फॉर मल्टीपल सरफेसेस का ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला apparent depth is equal to mu times of d by d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3. खत्म, डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, म्यू कौन सा है? वेर एवर आई इज देयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वेर एवर आई इन विच मीडियम इट इज देयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू हैव टू पुट. ओके, नो फाइन. So mu means wherever I in which medium it is there. It can be water. All water may also they can put. So that medium ka refractive index we have to put. 40 centimeters. Yes, 40 centimeters. D D वाला कौन सा यूज किया? इधर इधर से यूज करो. D1 by mu1 plus D2 by mu2 plus इसका थिकनेस कितना है? D3 by mu3 is 1 यूज करने का. आ गया. टेल मी 1 इंटू श्याम बोलो. आई का कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है? कौन सा मीडियम में है? 1. सो 1 इंटू नो d1 by mu1. d1 इज हाउ मच? ये सरफेस से कितना दूर है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो. d1 इज 10 by mu1 इज 1 प्लस d2 इस सरफेस से कितना डिस्टेंस है? 15 by mu2 इज 1.5 प्लस d3 कितना आई से कितना दूर है? 20 by इसका रिफ्रैक्शन 1. So if you add, you will get as 40 centimeters. See, one method is directly आपको एक एक सरफेस का करके we have to solve. बट वो लेंदी मेथड हो जाएगा. फॉर मल्टीपल सरफेस का यूज दैट फॉर्मूला mu times of d by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3. सो दैट टाइम टेंशन नहीं रहेगा. कोई भी सरफेस हो वी कैन कैलकुलेट. फ्रॉम आई से 40 सेंटीमीटर दूर में फाइनली आएगा. मतलब 35 40 मतलब समवेयर हियर फ्रॉम आई से डिस्टेंस इज 40. ओके, नाउ हियर ऑब्जेक्ट इज बॉटम में रखा. हियर से आई एम सीइंग. ओके, एंड each surface each medium का refractiveness are given and length also, distance also given, thickness also given. He is telling to find the apparent depth of the bottom of the container. मतलब उस ऑब्जेक्ट का apparent depth कितना है? Hmm. 18.64. No. Mu into d by mu1 plus d by mu2 plus d by ऑब्जेक्ट से आ जाओ.
म्यू कितना है आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में है ना, सो 1 टाइम्स 14. ऑफ 14, यस 14. 14 meters आंसर. D by mu1 plus D by mu2 plus D by mu3. Total, this is the total apparent depth. Solve करो ना कितना है. So the So outer one is outer one air है ना, ये मतलब indirectly is no depth है ना, no nothing is given means that means he is seeing from here somewhere, no depth है. all right, right. So if you solve, you will get as 14 centimeters. Okay. तो मतलब टॉप सरफेस से 14 सेंटीमीटर दूर पे नीचे है फाइनल. समझ में आया श्रीराम. फॉर्मूला इज सेम फॉर मल्टीपल सरफेस म्यू. सो कितना कर सकते करो. 24/6 प्लस 18/3 प्लस 2 4 6 8 प्लस 4 12 24/4 राइट. ओ सॉरी 4 राइट 6. सो 12 प्लस 2 14 सेंटीमीटर दूर में है. तो मैं चलो ना करो. Now I is in the medium of refractive index 2. He is asking apparent depth from the eye. Hundred centimeters. Yes, 100 centimeters. So mu is wherever I is there. So mu is 2 by D by mu1. So 20/2 plus 30/1.5 plus 20/1. So if you solve, you'll get us 100 centimeters. And test I said scheduled already. You write today reflection ka pura. Okay. I'll send the ID once again for you. So, Sivange. अनुष्का सात्विक अनुष्का चला. Yes, sir. ओके चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश. ओके विथ रिफ्लेक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वेयर हाइट इज h is 24 centimeters. they given from surface से 24 centimeters is the height. H value is given. So this is 24 centimeters is given H value, and this will be how much? This is H by 2 बोल रहे हैं ना. So this is, so इसका by 2 get 12 centimeters. So that means total 36 centimeters दूर में पूरा पानी है. Fish ऊपर है. Is asking distance between two images of the fish with reflection without reflection of the, ये वाला bottom में this is the plane mirror. This is the plane mirror. Now try without reflection.
हाँ, tell. Without reflection means directly fish से the ray will be coming. It is not hitting the mirror. So इसका मुझे apparent depth find करो. मतलब the ray is coming directly to the eye. Now use the formula mu I by d is equal to mu r by d dash. Use करो. And find the apparent depth from the surface. बोलो, अभी बोलो सर इस बार. Mu I by d is equal to mu r by d dash. So mu I is 4 by 3. The real depth is 24 centimeters. And same as d dash find करो. Mu r is air. Nine. कितना सिस्टम? 9. I don't know. कते बोलो? 9 ना? 9. हाँ. कितना? 9. 9 no. Mu I is how much? 4 by 3 by d. D is 24 is equal to mu r is 1 by d dash. Now fine. This is 24 by 1, right? If you reciprocal, you get as 4 by 3 into 1 by 24 is equal to 1 by d dash. So 4 6 24, 6 is 18, d dash is equal to 18 centimeters. This is the first reflection, matlab without reflection from the plane mirror. Now try for a with reflection. With reflection. ना करो. With reflection means आपको this is the object. आपको मतलब he is not seeing physical object now. इसका image he is seeing. इसका image will be the new object for this one after reflection. See, after reflection means indirectly the mirror का कितना distance है? The same distance the image is formed. So how much distance? This is how much? This is how much? This is 12, right? So this is also 12 centimeters. That line joining the object and image is always perpendicular to the surface, right? This one. Okay. Now he is seeing according to him. Now ray is coming from this object, right? Not this object now. Now calculate apparent depth. D dash find करो. इधर से ray is coming now. 36 centimeters. What did you tell me? I used D as 48 and then I used D is the distance from here to here. So 12, 24 and this is 12. So answer is 36. Yes. So 48 D. So mu I मतलब mu I is nothing but इधर से आ रहा है ना रे, इधर से आके इधर से जा रहा है ना. So water का. So 4 by 3 use this formula mu I by D is equal to mu R by D dash. So 4 by 3 by D is 48 is equal to mu R is air by D dash. So D dash will be how much? It is answer is 36 centimeters. Now he's asking what? The difference between the two things. So 36 minus 18 is finally 18 centimeters. 18 centimeters answer. Distance between two images is 18 centimeters. So with reflection means आपका image is acting like a object for the virtual object for this one. Now उधर से ray is coming and you have to take again formula, same formula. D by mu I by D is equal to mu R by D dash. कर सकते हैं? चलो ना थोड़ा एक करो देखते हैं. Now instead of plane mirror, I use concave mirror. Same concept. He's asking the value of D is close to. So what is saying? The concave mirror of radius of curvature is given is at a bottom of the glass that is water filled with 5 centimeters. पूरा 5 centimeters है, नीचे concave mirror है, ऊपर particle है. Okay. If a small particle is floating on the surface of water, the image as seen directly above from the glass is at a distance D from the surface of the water. So इसका image will be some distance D से है. Okay, from concave mirror से. He's asking the value of D is how much?
कैलकुलेट करो. Well, indirectly is telling to find apparent depth. This is a concave. साथ ही Anushka question ना? Question Anushka. Okay. Before plane mirror है, he's asking now he put a concave mirror. He's trying to find apparent depth as seen from the top view. मतलब see, either suppose mirror is there, here some you put one pen or something. We are not seeing direct object. We are seeing mirror में इसका image we are seeing. So he is seeing इसका image somewhere form होगा. That is D. That means apparent depth is asking. Find करो. So radius, since it is concave mirror, focal length is how much? So 40 by 2 is equal to 27. Is right or wrong? Right or wrong? Minus. Huh? So it should be a minus. Minus. Good. Minus. And now image distance find करो पहले. इस concave का image distance find करो now. So is it 9? Object distance कितना सेंटीमीटर दूर में? Object distance is how much from this mirror? Object distance is how much? Here say distance is how much? The ray is coming like this, right? The ray is coming like this. Incident ray is like this, right? This is taken as positive. And distance you will measure from pole, right? Pole से कितना distance है? It is minus 5, right? Now use the formula. UF by U minus F वाला कितना होगा? So is the answer 9? Answer 9 Nine. wrong. क्यों नेट में ऐसा दिया? मरे इतना कुछ भी नहीं करेगा, आंसर बोल देगा. करो. ओके. V is 20 by 3. V is 20 by 3. पहले सीरम पहले इधर तक करो. Find V image distance UF by U minus F, and U value is minus 5 centimeters. Plus 20 by 3 या minus 20 by 3 या? Plus. Plus 20 by 3 आएगा. That means now image from pole से it is going like this, right? Now same direction of the incident ray का direction में 20 by 3 में image is formed. Now this is acting like a virtual object for this one. Now apply करो. D by D dash is equal to mu I by D is equal to mu R by D dash. Now this is acting like a virtual object for this one, right? So now use करो. Mu I is nothing but mu of water by D. D is कितना दूर में? Initially इधर से कितना दूर है पार्टिकल का? 5 plus 20 by 3 कितना? So 8.75 is the total answer. 8.75 is answer. The mu D is equal to mu R by D dash, right? So mu of water is how much? 4 by 3 or 1.33. ठीक है, 4 by 3 is nothing but 1.33 only. 4 by 3 by D. D is how much distance from here से actual real depth, right? So 5 plus 20 by 3. So 15, 35 by 3. 35 by 3 is equal to mu R is the air only, 1 by D dash. So 3 cancel. So D dash will be how much? 35 by 4. 35 by 4. So it is 8 point कितना? 75 meters. So directly आपको मतलब विथ रिफ्लेक्शन मतलब इसका इमेज किधर फॉर्म होगा, दैट वन वी हैव टू नो. उस इमेज इज एक्टिंग लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम दिस ही इज सीइंग राइट. फाइनली किधर किधर यू नो अपरेंट डेप्थ आएगा बोल के वी हैव टू नो. ओके, ही कैन गिव प्लेन मिरर, ही कैन गिव कॉनकेव मिरर, ऐसा दे सकते हैं बॉटम में, राइट. चलो, so this is the first application of the refraction. Okay, now second application we have to go. Second application is refraction through glass slab. Refraction through glass slab. Slab मालूम है? Glass slab. What is slab means? A slab is formed when the medium is isolated from its surrounding by two plane surface parallel to each other. That is called slab. देखो,
this is called slab. Okay, when the medium, देखो इस तरफ air है, इस तरफ air है, it is separated by two mediums. इस तरफ a slab is formed when a medium is isolated from its surroundings. So after putting this slab, it is getting isolated from its surroundings by two plane surfaces parallel to each other. There are two plane surface parallel to each other. And slab का thickness है T. T is the thickness of the slab. And slab का refractive index is mu. And outside air है. An object is placed x distance दूर में. Object is placed from the slab. A surface 1 है, surface 2, and T is the thickness of slab. T is the thickness of slab. And from here, I am seeing the object. Definitely exact same distance में रहेगा, change होगा. It change, right? So that is वो refraction से हो रहा है. And उसका formula क्या होगा, उसका shift कितना है, we have to know. So इसका derivation जरूरत नहीं है, but I'll tell you how to do the questions. देखो, now इधर से ray is coming like this. Shift होगा क्या नहीं होगा देखेंगे. Ray is coming, object से ऐसा आ रहा है. So wherever you incident on the surface, you have to draw normal. Now relative denser. Denser में speed of light is slower. Slower is towards. It will not go straight. It bends. Right? जाएगा. Right? Again, you draw a normal. Now relative denser it is going. It bends away from normal. It will not go straight. It bends away from normal. If you extend backwards, it is, we are getting here image I. That means from here, say if I am seeing the object, we feel the object got shifted towards the incident ray. Incident ray का direction only we shifted. I saw it. It can be opposite also based on the refractive index का कहानी में. Okay. Now that shift कितना है? That one we have to get. That is called as delta. That shift is called as delta. कितना shift हुआ? And that delta का formula है, we will learn. Delta is nothing but shift. Delta is equal to T times of 1 minus 1 by mu. This is the formula. And this when the surrounding medium is here. When surrounding medium is here. Here. So shift का formula है T is the thickness of the slab. T is the thickness of slab is into 1 minus 1 by mu. So formula है shift का formula है T into 1 minus 1 by mu. वो बिफोर फॉर्मूला था ना शिफ्ट का, वो वाला अलग है, ये वाला अलग है. इट स्लैब का उधर d into 1 minus 1 by mu है ना, वो d is that is real depth into 1 minus 1 by वो अलग है, ये वाला शिफ्ट अलग है. ये स्लैब है, ऐसे शिफ्ट होगा. इट कैन शिफ्ट लाइक दिस आल्सो. ओके, नाउ वी राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हो गया कॉपीड. सो शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया ना. सो व्हेन सराउंडिंग इज एयर, ओके, नाउ लिखो रे शुड बी पैराक्सियल. I told you paraxial means rays are closer to the principal axis. Paraxial rays. Then only this all conditions will be true. And medium should be same on both sides of the slab. Definitely slab ka is taraf, us taraf, medium should be same. Okay. And the shift, if you see, it is independent of object distance. So shift ka formula hai, we got as T into 1 minus 1 by mu. Mu is the thickness of the, mu is the refractive index of slab. Okay, refractive index of slab, right? And if delta is positive, the answer one we whatever we got, if delta is positive,
That means shift occurs in the direction of incident ray. Very important. It is occurs in the direction of incident ray. If delta is negative, shifting occurs in the opposite direction to that of incident ray. Okay. So पहले वाला तो देख लिया ना, अगर A slab है, thickness T है, okay, suppose object is here, so जाएगा bend होगा, okay, this extent will get image like this. मतलब shift in this case में delta will be negative. Delta negative means आपको incident ray का opposite direction में shift हो रहा है. Okay, opposite direction में shift होगा. When this will happen? When this will happen? When the mu of surrounding is greater than mu of slab. Slab से ज्यादा outside ज्यादा है तो then the shift will be negative. पीछे जाएगा, incident ray के पीछे. So shift का second application है, wherever slab is there, slab में उधर से देखने से आपको image the shifted object is getting shifted. The shift we calculate by using the formula T into 1 minus 1 by mu. 1 minus 1 by mu. Done? साधिका एग्जाम लिखने का till 9 o'clock the window will be opened. Yes. Only reflection part sincerely करो. I put the display the rank also. I will check the rank and I will tell class में कौन आया बोल के. Okay. तो because plane mirror में formulas are less, तो theoretical जैसा तो भी रहेगा, थोड़ा इधर उधर रहेगा, तो पूरा मिक्स करके रहेगा. Okay. चलो हो गया. क्वेश्चन करो. Find the distance of final image of O as seen by the eye. Okay, eye is here. Here object. And this is a slab of thickness 15 centimeters. He is telling find the final image of O when seen through the slab. मतलब indirectly saying to find shift. Find करो. So 5 centimeters. Huh? So 5 No. towards the plus slab. 5 या minus 5? Plus 5. मतलब it shift towards right, left or right? So left. Yes, correct. So shift का formula है mu into t into 1 minus 1 by mu, right? Thickness is 15 into 1 minus 1 by 1.5. So if you subtract, you'll get as plus 5 centimeters. Now incident ray check करो. Object is here. Incident ray is coming like this. मतलब this direction you should take as positive. So since you got plus 5 centimeters, you have to shift here in the direction of incident ray. In the direction of incident ray, you have to shift here. So answer is 5 centimeters. Yeah? Yes. No. ठीक है. Understood, right? ये वाला. Now, if the surrounding medium is not air, outside में air है, so क्या आएगा? 1 के जगह में mu of surrounding by mu of slab. This is the formula. Shift का formula T into 1 minus mu of surroundings by mu of slab. Done. Yeah. Now करो. Now surrounding medium is not air. I am seeing here from this object. Now find the final image of O as seen from the eye. मतलब indirectly shift चाहिए. And tell me send me left or right also I want.
since object is there, object's ray is coming like this direction you should take as positive. Minus 7.5. No, So -5 -5 मतलब it is 5 centimeters left or right? left side. 5 centimeters. T into 1 minus mu of surroundings by mu of the slab, and thickness is 15. So 15 into 1.5 minus 0.5 by 15. So into 10 करो और by 3 हो जाएगा. So क्या होगा? 3 हो जाएगा, right? So 3 into 5. So -5 centimeters. So since incident ray का opposite direction में the image will be formed 5 centimeters दूर में, here I is formed. Okay. Okay. Now we will combine with the slab and the mirror. कहानी देखेंगे, समझ में आ जाएगा स्लैब में. ठीक है ना, करो एक बार. ओके, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है.